Hey everyone, I am Mr. Helper. Today's video is about how to find The Witcher 3 save file location. So let's get started. Open this PC. Open local disk C. Open users folder. Open your username folder. Open documents. Open Witcher 3 folder. Open game saves folder. This is your save files. Now it's up to your choice. You can make backup of this The Witcher 3 save file or you can overwrite with a new one. If you find this way difficult to follow, then there is a simple way also. बहुत खूब मिस्टर हेल्पर, आप मुझे भी कुछ बोलने दो. Oh yes guys, I have someone very special with me today. He wants to talk to you about something very important. Please listen to him very carefully. After that we will proceed further. Hey guys, मैं हूँ स्पैपनो. मैं काफ़ी महीनों से अपनी गेमिंग चैनल स्पैपनो पे स्ट्रीम कर रहा हूँ. मैं आप लोगों से कनेक्ट होना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ. बट अब मैं निराश हो गया. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं 0 व्यूअर्स के साथ स्ट्रीम करता हूँ. सो मैं बस आप लोगों से यही चाहता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ओपन करिए. वहाँ पर आपको मेरी गेमिंग चैनल स्पैपनो का लिंक मिल जाएगा. बस उसे ओपन कर मेरी गेमिंग चैनल स्पैपनो को सब्सक्राइब करिए. मैं वापस फिर से स्ट्रीम करूँगा जब मैं देखूँगा डिसेंट अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर आ गए मेरे चैनल पर. गाइस, मुझे बस इतना ही समय मिला था मुझे बोलने के लिए. सो मैंने कहा मैं और ज़्यादा समय नहीं ले सकता मिस्टर हेल्पर का. आप बात को समझो. मैं मिलता हूँ उस चैनल पर, आप लोगों से बात करूँगा. जितना मन बात करना है उससे बात कर सकते हो. ओके गाइस, सो मैं अब चलता हूँ. बाय. Don't worry Spapno, my loved one will subscribe to your channel. Guys, please check the description and subscribe Spapno's channel. Please help him to grow. Okay, so that's been said, let's proceed. Press Windows key plus R button and type %sign user profile. And once again %sign and press enter. Open documents. Open the Witcher 3 folder. Open game saves folder. Still having difficulty to follow? Don't worry, there is another way to come to this location. The simplest one. Open this PC. Click on documents. Open Witcher 3 folder. Open game saves folder. Now finally you got your save files. As I said before, it's all up to you. You can do whatever you want to with these save files. It's your choice. Before I end this video, I want to remind you once again, I have a gaming channel named as Spapno. Please check the description of this video. There will be my gaming channel links. Please click on the link and subscribe to my channel. Okay, so that's all for today. I hope you find this video informative. If you do, then make sure to like, comment, share and subscribe. So until then, take care. Have a nice day and I will see you next time. Bye.